We'll be starting with theories of rights and duties for the next class. We are changing how we discuss things. Syllabus mapping किस तरीके से रहेगी? We have to understand about interest versus will theories, co-relativity, classifications, and Indian applications for the same. The main theories of rights and duties in jurisprudence provide different perspectives. We have to understand that, and they are very important for the fundamental nature of legal rights. First, which we have to learn about is will theory. I'll add a page again. Add a page. So I'll explain everything first. First, we need to talk about is the will theory. First is the will theory. It is basically by Mr. HLA Hart. अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, तो just let me know if you remember under what schools of jurisprudence Mr. Hart was. Comment that, please. Comment. Yes. So in the will theory, it is also known as the choice theory. Choice theory. Right? It posits that a legal right is an individual's power to control another person's actions. ठीक है? It is a legal right. It is a legal right, and it posits, मतलब it says that it is a power. Says that it is a power. Is a power to control another person's actions. Someone another actions. Another person's actions. ठीक है? A person has a right only if they can choose to enforce it. विल का मतलब क्या हुआ? हमारे पास, हमारे खुद के पास विल होनी चाहिए कि हम एक चीज को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है? दैट कम्स अंडर द प्रोस्पेक्ट ऑफ विल. इफ वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी. इस बात का हमें ध्यान रखना है. कोर आइडिया यही है. अ राइट गिव्स द अ राइट गिव्स द राइट होल्डर अ सॉवरेनिटी. राइट होल्डर अ सॉवरेनिटी और कंट्रोल over the duty bound individual. Over the duty bound individual. That is the basic point. ठीक है? इसका ध्यान रखना. That is the first theory, which is the will theory. Second, we have the interest theory. Interest theory. It is developed by Rudolf Rudolf von Jering. Right. It defines a right. It defines a right as benefit theory. Theory. ठीक है? And it is protected, and it is an interest which is protected by law. We have to remember that. It is an interest which is protected by law. That is basically it. Core idea is that a right is a legally protected interest and the law exists to safeguard those interests. ठीक है? इसमें right एक इंटरेस्ट है और जो लॉ है वो इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. दैट इज द सीन. यू हैव टू रिमेंबर दैट. थर्डली, हम इन दोनों चीजों की क्रिटिसिज्म भी देख सकते हैं. दैट द फर्स्ट थ्योरी विच इज द विल थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड. The will theory is criticized for being too narrow. For example, it fails to account for the rights of individuals who lack the capacity to exercise their will. For example, if someone is intoxicated, he or she will not be exercising the rights through his or her will. So that is the whole point. We have to take that person in notice as well. Second, for the interest theory, the criticism might come into play, right? That
The theory is sometimes criticized because not every interest is protected by law. कुछ कुछ लोगों के लीगल इंटरेस्ट होंगे तो उसको हम लॉ से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. For instance, a person may have an interest in clean environment, but unless a specific law grants in respect to clean environment, we can't do a thing, right? There have to be a there has to be a fine balance while we go into the prospect of interest theory as well as the will theory. Then we have the Hoffield analysis of jural relations. Hoffeld's analysis of jural relations, right? It is by Wesley Newcomb Hoffield. Hoffield हमें लिखना है, इसका हमें ध्यान रखना है. It offered a more precise and comprehensive framework and argued that the word right is used too ambiguously in legal discourse. जो right है यार, वो किसी भी चीज में हम उसे यूज करते हैं, ऐसे नहीं करना. राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है लीगल थ्योरी का. उसे हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए सर का ये आर्ग्यूमेंट. ठीक है. हॉफील्ड की जो एनालिसिस है, इट रिवील्स दैट अ राइट कैन बी वन ऑफ फोर थिंग्स. ठीक है, चार चीजें में से एक हो सकते हैं. पहली है क्लेम राइट. क्लेम राइट. नेक्स्ट वी हैव इज लिबर्टी और प्रिविलेज. और प्रिविलेज. देन वी हैव पावर. एंड देन वी हैव इम्यूनिटी. ठीक है, इन चारों चीजों को ध्यान रखते हुए हमें करना है. अ क्लेम राइट इज अ राइट इन इट्स स्ट्रिक्टेड सेंस, मतलब एंड इट इज को रिलेटेड टू अ ड्यूटी. तो राइट्स वर्सेस ड्यूटी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा. अगर आपको वो नहीं पता तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा. पावर में हमें क्या लिखना है? पावर इज द एबिलिटी टू चेंज लीगल रिलेशंस, दैट इज टू क्रिएट, वेव और एक्सटिंग्विश अ राइट. थर्डली, फॉर अ लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी. यहाँ पे ड्यूटी खत्म हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी. ठीक है. एंड इम्यूनिटी इज अ फ्रीडम फ्रॉम अनदर्स लीगल प्रॉब्लम. है फ्रीडम फॉर फ्रॉम फ्रॉम अनदर्स लीगल प्रॉब्लम. ठीक है, मैं साथ साथ ही आपके नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. राइट. सो नाउ विल कम टू द प्रोस्पेक्ट्स. सबसे पहले हमने विल थ्योरी पढ़ी, कांत और हेगल की. इट यूज राइट एज प्रोटेक्टेड स्फीयर्स. ऑटोनोमस चॉइस मतलब विल होनी चाहिए. इंटरेस्ट थ्योरी जो थी आयरिंग की, इट डिफाइंस राइट्स एज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. ऑफ कोर्स इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करते हैं हमें ये देखना पड़ेगा. It operationalizes rights through purposive dignity-based readings, classifications, at the same time in respect to perfect and imperfect laws, positive and negative laws, real and personal laws. Right? So we have to make a fine balance between Indian jurisprudence as well. क्या पता क्वेश्चन इसके रिलेशन में आ जाए. राइट्स एक्सपेंसिव पर्पसिव रीडिंग्स है. केपी वर्गीजी का जो केस था उसमें मैंने आपको पर्पस के बारे में बताया था. आपके जो पिछले वीडियोस हैं उसमें भी आप इस चीज को समझ सकते हैं. राइट. नेक्स्ट, रिवीजन किस तरीके से होगी? विल वर्सेस इंटरेस्ट का फ्रेम. को रिलेटिविटी. इंडियन राइट्स की ज्यूरिस्प्रूडेंस किस तरीके से रहती है इन रिस्पेक्ट टू पर्पसिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पैराडिम्स. राइट. सो दिस इज इट. मतलब जो मैंने आपको ये एक 5 मिनट के नोट्स में पढ़ाया ना, यही है बेसिकली जो हमें पढ़ना था. ठीक है. इसके बाद मैंने आपका डायग्राम बना दिया है. निमोनिक्स भी हैं, पर आई डोंट थिंक सो कि इनकी जरूरत पड़ेगी. ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं. ठीक है. नेक्स्ट. राइट. क्लैट पीजी में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं? पहली चीज तो इंटरेस्ट थ्योरी रुडोल्फ वैन हेरिंग की है. अच्छा, मैंने जेहरिंग लिख दिया था, आई थिंक रुडोल्फ वॉन हेरिंग है का नाम. राइट. इंटरेस्ट थ्योरी की इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको लॉज बनाने हैं. इन रेम, राइट इन रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ध्यान रखना है. राइट इन रेम. ड्यूटीज ऑफ ऑल पर्सन्स. परफेक्ट राइट इम्प्लाइज. परफेक्ट राइट क्या होती है? एनफोर्सेबल कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर राइट. देन वेस्टेड वर्सेस कंटिजेंट राइट. वेस्टेड वर्सेस कंटिजेंट राइट. वेस्टेड मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट जो रहेगा वो हमारा जो प्रेजेंट इंटरेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे. कंटिजेंट मतलब इट इज कंडीशनल अबाउट अपॉन सर्टेन एस्पेक्ट्स, दैट इज व्हाई इट इज कंडीशनल. डिग्निटी बेस्ड राइट्स इंडिकेट व्हाट? पर्पसिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अप्रोच. मतलब जहां पे भी
डिग्निटी का प्रोस्पेक्ट आ जाता है, उस वक्त वी हैव टू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी। रेशियो वर्सेस ऑर्बिटर ऑर्बिटर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता दिया था। देन वी हैव पर्पसिव रीडिंग। पर्पसिव रीडिंग किस चीज को प्रिवेंट करता है? अगर हम किसी चीज को पर्पस से पढ़ेंगे तो लेजिस्लेटिव राइट का जो पर्पस है, जो लेजिस्लेचर का पर्पस है, वो हम कभी मिस नहीं करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज ओवर रूलिंग? इट इज, what does overruling do? It, you know it revolutionizes and it gives the evolution in respect to rights doctrines, right? So that is basically it. ठीक है, तो पैसेज दिया है मैंने आप लोगों को यहाँ पे, आगे ये शॉर्ट पैसेज दिया हुआ है विल वर्सेस इंटरेस्ट का। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे ये भी लिख दिए, राइट? नेक्स्ट वी हैव concepts of personal personhood and legal personality. We'll start that in the next class. Thank you for joining in. I hope you liked the video. This is the new format. Please do write in comments if you like this or not. Thank you.